Dear students, dear friends, dear newcomers, dear youngsters, dear colleagues. I am Birendra Kumar Sinha, retired Chief Manager at State Bank of India. I am going to discuss with you about banking history. I am going to give you some briefs about banking history. Before the year of 1969, there were private banks which were functioning in India. On 14 July 1969, government took a step and 14 nationalized banks were constructed. And the aim behind this was to development of rural areas, remotest area of the country, providing banking facilities to the agriculture, small scale industries, and the persons who are poorest in the society. So there was great motives behind the nationalization of the bank. After the nationalization, Green Revolution took place, and that was great achievement of the government. In the year of 1980, six more banks were nationalized, and the total number of public sector banks becomes 20. But after some times, some public sector banks goes on loss. So there was need to recheck the policy of the government. Narasimham Committee created for seeing the matter of the bank. Then Narasimham Committee declared that there should be private bank also. Besides public sector banks, there should be private sector banks and foreign bank sector banks in our country. After that, this happened in India, and economy developed properly. But public sector banks are not performing betterly. Some public sector banks are going on loss regularly. Then Narasimhan Committee then declared that there is need of merger of bank in the year of 1998. Second Narasimhan Committee report declares that there is need of merger of bank. And after some times, this was not introduced, and in the year of 1917, SBI merged with five associates banks and Mehla Bank as per Nayak Committee recommendation. In the year of 2018, merger steps started, and 1st April 2020, more banks were merged in large bank. So now the number of public sector banks are only 12, including State Bank of India. So these are the history of brief history of bank. दोस्तों, 1969 से पहले केवल प्राइवेट बैंक्स काम कर रहे थे। 1969 के बाद प्राइवेट बैंक्स खत्म करके नेशनलाइज बैंक बनाया गया, 14 नेशनलाइज बैंक किया गया 1969 में, और गवर्नमेंट डिसाइड किया कि कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद बहुत सफलता मिला, क्योंकि इसका मेन एम था गांव देहात में लोन प्रदान करना,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, और इसमें सफलता मिली गवर्नमेंट को, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया और बहुत सफलता मिली, हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ा। 1980 में फिर 6 बैंक को मिला करके 20 नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा कि और प्राइवेट बैंक का भी होना जरूरी है, और नरसिम्हन कमेटी 1992 में अपना रिपोर्ट दिया कि तो पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होना चाहिए, काम करना चाहिए, और फॉरेन बैंक भी काम करना चाहिए। अकॉर्डिंगली बैंक में वैसा बैंक का कार्य होने लगा हमारे देश में। लेकिन अब कुछ समय के बाद फिर देखा गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक लॉस में जा रहा है। तब फिर नरसिम्हन कमेटी ने दोबारा अपना रिपोर्ट पेश किया 1998 में। वो रिपोर्ट के मुताबिक जो लॉस में ब्रांच था उसको मर्जर होना चाहिए था, लेकिन इस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, और फिर बाद में ये देखा गया कि बहुत सारे बैंक लॉस में चले जा रहे हैं। तो इस लॉस को चेक करने के लिए नायक कमेटी को बैठाया गया। नायक कमेटी के डिसीजन के मुताबिक नायक कमेटी ने भी वही डिसीजन लगभग दिया जो नरसिम्हम कमेटी 1998 में दिया था कि मर्जर ऑफ बैंक ज़रूरी है। इसके मुताबिक फिर बैंक का मर्जर शुरू हो गया, और बैंक का मर्जर शुरू हुआ 2017 में। स्टेट बैंक को 5 एसोसिएट बैंक के साथ मर्ज कर, और महिला बैंक के साथ मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक में। उसी तरह 2018 में मर्जर का फिर डिसीजन लिया गया, और 1 अप्रैल 2020 में 4 बड़े बैंक को मिला दिया गया। 4 जो लॉस मेकिंग ब्रांच थे, लॉस मेकिंग बैंक थे, उनको प्रॉफिट वाले बैंक के साथ, अच्छे जिनका प्रॉफिट ग्रो कर रहा था उनके साथ मर्ज कर दिया। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में 1 अप्रैल 2020 में 4 बैंक और नेशनलाइज हुआ, मर्जर हुआ, सॉरी 4 बैंक का मर्जर हुआ बड़े बैंक के साथ। अभी स्टिल पोजीशन है 12 नेशनलाइज बैंक है हमारे यहाँ, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है। धन्यवाद।